flash fill. Now, if you realize something, I have taken out some data. This data, what you're seeing, 4645. So after I've typed it, all I'm going to do is I'm going to go into known as flash fill. I'm just going to click this button. अरे क्या हुआ? I didn't use a formula. I clicked on button. Excel understood that I want to extract certain digits from my data. That extraction has happened because all the digits are in the same location. Do you realize that? Flash fill will automatically extract data for you without using any formula, provided the data is in the same format. For example, in the second case, this data was here. Now let's do flash fill. See what happened. The second case, he has picked up the alphabets instead of numbers. So what flash fill is doing is he is picking up a particular sequence of data which is in the same format for all the different rows. The only limitation while you use flash fill is that my data should be in the same sequence. If I chose CVK FRS and I did a flash fill, picked up all of that, extracted all of that. Like the same example is here. I have an email address. I've got names of the people and I have created this email address. Now I'm going to apply a flash fill. Look at this, how amazing. It automatically picked up both the names, put a dot in between, put an @ and put the same email address as the first one. Because there was a pattern with which I have created this particular cell. Flash fill follows that pattern and applies it to all the remaining cells. If you had to create, you had, let's say, 200 employees, and you had to create email addresses for all of them with your company email address as an extension, तो मैं ये करता ना, एक जगह पे टाइप करता सिर्फ जो फॉर्मेट में मेरे को उनका ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है और फ्लैश फिल करता, सबके ईमेल एड्रेसेस बन जाते हैं विद इन अ सेकंड. उनको बोलता योर ईमेल एड्रेसेस हैव बीन क्रिएटेड, दिस इज योर ईमेल एड्रेस व्हिच यू आर गोइंग टू यूज, एंड आई वुड टेक दीस ईमेल एड्रेसेस एंड ऐड इट टू माय सर्वर. हमारा जो इंटरनल सर्वर है वेबसाइट का, उसमें डाल दिया, कहानी खत्म. So flash fill is a fantastic tool. It saves a lot of time and it's a very efficient tool to use. But the data entry has to be done correctly, like I showed you in this example over there. Like I told you कि भाई वो / होना चाहिए, नंबर के साथ होना चाहिए. अगर ये डेटा एंट्री रॉन्ग है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी रॉन्ग आएगा. फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग. जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री रॉन्ग है, उसने नंबर एंड में डाला है, नंबर बीच में होना चाहिए, बट एक गलती की वजह से उसका रिजल्ट गलत आ रहा है. जैसे यहाँ पे तो उसने 2 मिस्टेक किए थे, नंबर एंड में डाला और स्लैश भी नहीं डाला.
तो रिजल्ट ये आ गया. Then the computer won't understand. It will pick up the wrong result and display. So this data entry part is very important whenever you are wanting to use flash fill in the future. I will select this data and I say, चलिए इसको कट कर देते हैं क्योंकि I don't want it like this. अच्छा, और यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ. तो ये क्या हुआ? मैंने कट करके पेस्ट किया तो डेटा तो यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पे चेंज तो नहीं हुआ. चलिए क्या करेंगे, कॉपी करते हैं. ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ. व्हेन आई गो इनटू पेस्ट, inside paste I've got multiple options, and in this there is one option known as transpose. Within 1 second my entire data changed from horizontal to vertical. देखिए सेम डेटा है, उसको मैंने वर्टिकल कर दिया. Now you prepared a sheet, you gave the sheet to somebody, that person started entering data, and you said okay. So you said एक data entry sheet बनाना है हमको. We want to analyze the bad effects of alcohol. Example है, इसे ठीक है सर, बना लेते हैं शीट. तो उसमें हमको सिर्फ एक क्वेश्चन डालना है. पर्सन का नाम आएगा और नेम के बाद पर्सन का एज आएगा, और उसके बाद वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, हाउ मेनी glasses of alcohol do you drink per day. बस हमको ये बस 3 चीज का आंसर चाहिए. पर्सन एज, पर्सन नेम एंड हाउ मेनी ग्लासेस यू ड्रिंक. ठीक है, तो पर्सन विल स्टार्ट पुटिंग रैंडमली एनी नंबर. 20 डाल देगा, कोई 25 डाल देगा, कोई 21 डाल देगा. People will randomly put whatever they feel right for the number of glasses of alcohol that they are drinking. Now, because we are doing a survey or we are trying to find out the ill effects of alcohol, we will create something that we call as data validation. That means we will allow you to put data, but the data will be validated. So to create a data validation, we click on the cell where we want to apply the validation. And then we go into something known as data. There we have an option known as data validation. And we choose data validation. Over here he says, okay, what do you want to do? I want to allow whole numbers. Decimal नहीं चलेगा. ठीक है, no problem. Second, I want to put a minimum. Okay, 0, because I can't put 1. There can be so many people who don't drink at all. So 0. And I want to put a maximum. Why I want to put a maximum? Because I want to pop up I don't want them to be able to put any random number for fun. कोई 4 डालेगा, कोई 50 डाल देगा, कोई 75 डाल देगा, ऐसा थोड़ी होता. बॉडी में लिमिट होता है. Per day, person should not have more than particular number of glasses.
Let's say I put 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, and I say okay. A person comes and says, how many classes? I have 5 here. He puts 5 and presses enter. And an error message comes on the screen. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. It's a very odd message, isn't it? He'll say, what rubbish? What is this? What is this data validation? I don't understand. He'll try, retry. He'll say 5 nahi chala, chalo 7 dalta. Again, you get the message saying, forget it here. It's not working. It's not letting me even click anywhere. ये क्या है? Rubbish. This I'm not using only. He will get irritated and get out. It's a useless server form बनाया है, काम नहीं करता. अभी इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं. तो पहले तो मैंने डेटा वैलिडेशन दे दिया कि मोर देन 3 क्लासेस तो अलाउड ही नहीं है, इसको कहानी खत्म हो गई. अब we go back to data validation and we go into something known as input message. And we give a title saying glasses of alcohol, and we put a message saying please enter a valid number between 0 and 3. And then we go and say create an error alert, giving it a title saying not a valid number, and we put a message, you are drinking too much. Question mark. And we say okay. Now look at this. The form will have automatically a message, glasses of alcohol. Please enter a valid number between 0 and 3. Somebody has to ignore and put 4 by mistake. Not a valid number. You are drinking too much. Like this, you can create data validations for various aspects. This was one particular example I have given you, where you can create a data validation along with your own customized error messages like this one. You can say retry. I can change this to 2, for example. There, everything goes away. The message also disappears. The error message also goes away. My form is complete. When I go back here, he again shows me that this cell is for entering a valid number between 0 and 3. Person enters 0, you can bypass it, not a problem. But as soon as he goes up and he tries to put a funny figure like 3.5, he gets an error message saying you are drinking too much. In this example, I have certain dates. And I want only people to be able to punch orders which fall in that date range. मेरा अगर ऑर्डर का शीट है और अगर मेरा पास डेट का कॉलम है and a person is punching the date, और डेट के बाजू में मेरे पास प्रोडक्ट का डिटेल्स है और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया उसका प्राइस है सपोज, तो इस डेट पे कौन सा प्रोडक्ट मैंने सेल किया, कितने पे सेल किया. बट ये जो डेट का रेंज है वो ऐसा होना चाहिए that it should not go beyond a particular date. See, it is very tricky. I can't say कि हाँ सर ऐसे करते हैं, मैं टुडे का ही डेट डालता हूं, तो person should be able to only punch
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैंने टुडे के पहले का डेटा अलाउ नहीं करना है मुझे. बट दैट्स नॉट बीइंग फेयर, बिकॉज अगर समझो आज मैं भूल गया डेटा एंटर करना, मैं बोलूंगा अरे यार मेरे पास फाइल में है रिकॉर्ड, मैं काम करता हूँ कल सुबह आके कंप्लीट कर देता हूँ, आधा मैं आज करता हूँ आधा कल करूंगा. इफ आई पुट अ कंडीशन ओवर हियर फॉर माय डेट कि इट शुड स्टार्ट ओनली फ्रॉम टुडे, तो फिर तो मेरा पीछे का काम होगा ही नहीं कभी भी. राइट और रॉन्ग, है ना? नहीं होगा ना. I can't restrict this by putting only one particular date or one particular formula. Again, I have to create a range over here. If I बोलता हूँ ठीक है, I will give, for example, the orders are going off of the month of March. तो मैं एक उनको opportunity दूंगा कि भाई we are on 3rd of March. I'll do one thing. From 1st of March, you can start punching in data up till today. That means बैक डेट भी अगर आप करोगे, आई एम गिविंग यू अ स्कोप ऑफ ओनली डूइंग अ बैक डेट ऑफ 3 days. उसके आगे यू कैन नॉट बैक डेट योर डेटा एंट्री. सो हाउ डू वी क्रिएट? ठीक है, सो वी गो डेटा वैलिडेशन, अलाउ एनी वैल्यू बोल रहा है वो इधर. यहां पे मेरे पास डेट का ऑप्शन एंड आई एम अलाउड बिटवीन, आई हैव टू पुट अ स्टार्ट डेट. So let's say I put 3/1/2022. And end date में I'm going to put equals to today. है ना ये फॉर्मूला टुडे का? If you remember, I'm done with your today ka, where it shows us today's date. तो इसी रेंज के अंदर my data has to work. Input message में कुछ डालना है. I'm just going to say enter a date. I don't need to put anything else. It's okay. Error alert, yes. अगर आदमी मिस्टेक करता है तो I can always put over here invalid date. I can put over here date. Please enter the date after no, please enter a date between 1st March to today. That means I'm telling him clearly that what mistake you're doing is that you're entering a date which is not between 1st March and today. And I say okay to this. अब डेट डालते हैं. in March 2022. ठीक है, अब बोलोगे सर हाउ इज इट वर्किंग? क्या हुआ? चल रहा है ना? नहीं चलना चाहिए ना? हो गया कि नहीं? हाँ, प्लीज एंटर अ डेट बिटवीन 1st March to today. रिट्राई या कैंसिल? कैंसिल करेगा तो डेट इरेज हो जाएगा.
Let's say I've got this data. And I select this data and I copy. And then I click on, let's say A5. And I go to paste. And in paste, I've got something known as linked picture and paste link. Let's look at first paste. And copy करके paste कर दिया. 14 हो गया 12. Just look at this. What happened? So what happened? 8 हो गया 3. Amazing, isn't it? I didn't use any formula. Have I? I've not used any formula. When I did pasting, it automatically created a formula for me. 3. So whenever you have data in one sheet and you want that same data to be pasted on a new sheet, whereby if any change happens in the first sheet, it should happen on the second sheet also. In that case, you will go to paste link. So that when in sheet 1, 16 becomes 20, then in sheet 2, it should be 20 also. So, as I said before, when you are copying and pasting data, the copy and paste process is not just copy kiya or paste kar diya. The copy and paste process has got various options under them. Each of these options have got certain relevance, certain importance. Some of them will paste your data with a format like formula. Some of them will paste your data with a number formatting and formula. Another one will paste keeping the source formatting in mind. भाई वो formatting क्या था, उसका font size क्या था, सब कुछ mind में रखेगा. One which will have no borders. If there was some border in your data, वो border निकाल के paste करेगा. Next one, it will keep the column width the same when it's pasting. Just imagine. So if I had copied this data and if I was pasting on a sheet, and if this sheet had columns which were like this, just showing you, for example. And if I went to sheet 1 and I copied this data and I went to sheet 2 and I just clicked it on this particular area, and when I went and said I want to keep the column, look at that. Automatically वो उसको stretch करके data को अंदर fit करके दिया मेरे को. Normal paste करता तो ऐसा नहीं आता. Normal paste करता तो सीधा जैसा वैसा आता, वो narrow में ही अंदर data आ जाता, खत्म. That's why when you're doing a copy and a paste, you need to understand all these options are more important. And these you should be using depending upon the purpose of your sheet. Like for example, if I'm looking at only pasting the values and I don't want the formulas to work on them, then I will go to the option over here known as paste values. उसने value paste करेगा, formula paste करेगा ही नहीं, even though the data is got from a formula. So my first sheet data will change, but second sheet data won't change. Why?
because what I pasted was not the data with the formula. I pasted only the data because I said only paste the value for me. Don't paste the formula for me. So this is the way you are supposed to use the copy and paste feature. That's why I never believe in Control C and Control V. मैं shortcut में इसलिए believe नहीं करता. Because the way you paste your data makes a very big difference to the functionality of that value or that number. अगर मैं उसको normal paste करता हूँ, so I am deactivating all the possibilities that I can get from that number. But if I am pasting them as a link, then whatever value will change on my first sheet, automatically my second sheet value will change, which can then be added to another number which is typed over here. तो यहां समझो मेरे को कोई नंबर्स हैं और मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया. अब बिकॉज ये पेस्ट लिंक किया है मैंने, अभी एट द मोमेंट देखो ये नॉर्मल पेस्ट. अब अगर मैं शीट 1 में इस 20 को चेंज करता हूं टू 35, मेरे शीट 2 में नहीं हुआ चेंज, तो ये जो मेरा फिगर है वो रॉन्ग है ना, because this data is not from this sheet, this data is from this sheet. But just because this paste is my copy paste, Control C and Control V, इसीलिए मेरा 2035 नहीं हुआ. अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और अभी अगर मैं इसको पेस्ट करता हूं इधर विद द ऑप्शन ऑफ पेस्ट लिंक, और फिर अगर मेरे शीट 1 में ये 3550 हो जाता है, तो उधर ऑटोमेटिकली मेरा पूरा टोटल चेंज हो जाता है. There you go. See, I got my answer 123. Imagine one small option, जो मेरा पेस्ट लिंक का ऑप्शन था, that has made all the difference in my calculation on sheet number 2. So I've got data in sheet 1 and in sheet 2 I put my question. I go to data and I say, okay, let's go to data validation. Under data validation, I had various options. I'm going to go to the option known as list. This time I'm going to go to the option of list because my data is coming from a list. So he's saying, where is your source? आपका list है कहाँ? From where will I get this data? I go to sheet 1 and I select those cells from where my data is coming. So automatically, if you see my source, right? मैं ये जो मैंने select किया वो आ गया. And if I say okay, you will find a drop down has appeared. देखिए drop down आ गया sheet 2 में. When I click on this drop down, it shows me Indian, Chinese, Italian. I can choose any option. Suppose Chinese, तो ये लीजिए, Chinese आ गया. Italian, Indian. It works beautifully, this drop down in Excel. So any data you have, and if you want that data to be displayed as a drop down, then this is how we can create drop downs from existing data. It can be any data, it can be numbers also, doesn't have to be text. ये तो एक example मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ. So suddenly you realize, अरे यार Indian should be South Indian, तो आपको टाइप करने का मन करता है, आप टाइप करते हो भाई मुझे तो साउथ इंडियन खाना पसंद है, और आप एंटर करते हो तो सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा. It will not accept anything else except the ones which are there in the drop down. तो जो मैंने यहाँ पे drop down create किया है, उसके एरर मैसेज में जाके मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इनवैलिड डेटा, and after typing invalid data I am going to type please choose option from, no, please choose
from the drop down, क्या होगा यहाँ पे clearly एक message आ जाएगा. So if a person tries to manually type over here, you get this error, invalid data, please choose from the drop down only. एक ड्रॉप डाउन तो मैंने क्रिएट कर दिया. Drop down, that means this is one drop down which is your favorite food, और मैं एक और ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहता हूं which is your favorite dish, for example. Now obviously if I'm going to choose a drop down of Chinese, तो मेरा डिश भी Chinese होना चाहिए. I can't be having the Indian dishes when I choose Chinese. या अगर मैं इटालियन करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे इटालियन आने चाहिए. Let's understand how to create a dependent drop down. This dish का drop down is dependent on the food that I choose. First, I want to remove this drop down because I'm creating a new one. So यहाँ data validation में जाके I can always remove a drop down by choosing clear all. Delete any data validation. You can go and say clear all. तो देखिए चला गया. The drop down is gone. I can type whatever I want to type now. Okay. So I'm going back to sheet 1. Sheet 1 में I put the data Indian, Chinese, Italian. And here only I've got the option. हाँ भाई Indian में कौन से dishes हैं? Indian में रोटी है, rice है, let's say some paneer vegetable is there. Different things are there in Indian food. I'm just putting some options only. जैसे पाव भाजी हो गया एक option. वेज पुलाव हो गया दूसरा ऑप्शन. I'm just putting ऐसे ही randomly, ठीक है ना? या बेसिक दाल देते हैं, दाल विद रोटीज हो गया ऑप्शन, ठीक है ना? Same way Chinese. Now you notice something. I'm typing the data one below the other. I'm not typing side by side. मेरा पहला कैटेगरी इंडियन है, उसका डेटा मैंने एक के नीचे एक टाइप किया. मेरा जो चाइनीज है वो भी डेटा मैं एक के नीचे एक टाइप करूंगा. I'll explain to you why I'm doing this. I'm doing this because I am creating groups. This is one group of data. This is the other group of data. And this is my third group of data. 1, 2, and 3. Whenever you are creating a drop down along with a dependent drop down, it's very important to understand in which way the data is supposed to be typed, because based on that our drop down functionality is created. एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को अगर आप ब्रेक करोगे आपका ड्रॉप डाउन नहीं काम करेगा. तो फॉर्मेट इज वेरी सिंपल. I've got my main headings one below the other, and I've got all the items of each heading one below the other. Indian का B में है, Chinese का C में है, Italian का D में है. ठीक है? That's the first step, that how your data should be typed in order to create two drop downs over here. All right, now what I'm going to do is ये data तो मुझे मिल गया, फॉर्मेट भी कैसे करना है वो भी देख लिया मैंने. What I'm going to do is I'm going to create a group for all this. मैं सबको एक ग्रुप में डालूंगा. I'm going to group all of them. जैसे Indian, Chinese, Italian. What is this? This is the food. So I'll go to formulas.
नेम मैनेजर में जाके बोलूंगा भाई एक नवा रेंज क्रिएट करना है हमको called food. So I created a new range in my name manager known as food. Then I go and choose my Indian dishes and I say हाँ भाई ये तीनों dishes जो हैं या ये तीनों data जो है वो कहाँ आता है, वो इस Indian word के अंदर आता है. Actually ये तीन को इससे लिंक करना है ना हमको. Always remember, raw data should always have a common linking factor, a factor that's going to link them together. There has to be some connection created. इसीलिए मैंने डेटा ऐसा टाइप किया है. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन हियर. तो मैं नेम मैनेजर में जाके बोलता हूं अभी क्या करूंगा, अब आई विल क्रिएट वन मोर रेंज नोन एज इंडियन एंड आई विल यूज द सेम वर्ड, द वर्ड व्हिच आई हैव टाइप्ड ओवर हियर सो दैट द लिंक इज मैच्ड. ये मेरा इंडियन रेंज बन गया. परफेक्ट. सेम वे आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस. I'll go to name manager and this one I will name as Chinese. Same way, I'll create this, go back to name manager and create one more name range known as Italian. What did I do? I created my links, or I put all the data in individual groups which are linked with each other based on these three names. Let's move to the second step of this. अब हम drop down create करेंगे. So we are looking at creating a drop down. I'll go to data as usual. I say चलो भाई data validation में चलते हैं. Let's go to data validation and choose the option known as list. List means data which is going to be extracted from somewhere else. तो मेरा जो source है वो food है, because यहाँ पे what am I finding? Food ना. So I'll put equals to food. That the data that you're going to get is stored in a name range which I created known as food. वहां पे मेरा data पड़ा है. देखिए data आ गया. Indian, Chinese, Italian. चलिए. Next head. What about the dish? Go back over here and choose this and say okay. Again, I go back to list. ये type में मेरा source क्या है? My source is not a direct source. Do I have a direct source? No. The items which will appear over here are based on the type of food which I choose over here. अगर मैं Indian choose करूंगा तो यहाँ पे दाल रोटी आना चाहिए. मैं Chinese choose करूंगा तो noodles आना चाहिए या fried rice आना चाहिए. तो ये जो मेरा data है वो dependent on this data है. That is why in the source we use a formula known as indirect. The indirect formula in Excel is used for this purpose, where if there is any data which has to be displayed, but that data does not come from a direct source but from an indirect source, which is in this case, then we mention equals to indirect and we mention which cell has got that data. जो मेरा food है वो D3 सेल में आने वाला है, इंडियन, चाइनीज या इटालियन. तो जो भी मेरा डेटा यहां पे आएगा वो D3 के बेसिस पे आएगा. That's the reason why we put this formula equals to indirect D3, because that's how our data is going to be presented to us. So I go here, I say चलिए देखते हैं if it works. I choose Chinese. देखें क्या ऑप्शन मिलता है हमें. Beautiful. I got only fried rice, noodles and stir fry. और कोई ऑप्शन ही नहीं है. इंडियन या इटालियन, पिज्जा एंड पास्ता, इंडियन
पाव भाजी वेज पुलाव डाल दो. This is the way we can create drop downs for an existing data from a sheet. A lot of times you may have one main product sheet, for example, वहां पे कोई values हैं, आपको वो values को वहां से यहाँ लाना है और फिर उन values को आगे जाके add या subtract या multiply करना है. हाँ, क्यों नहीं, आप कर पाओगे, why not? मैंने आपको text के साथ दिखाया. Same thing can be also achieved with numbers. The same thing. मैंने आपको ये example इसलिए दिया because it is very easy to relate. That's why I created this. But the same example you can use with numbers also and extract numbers from a particular sheet and bring it over here so that the person doesn't have to manually type those numbers. It can automatically appear over here. Let's say I was planning an event. एक हम इवेंट प्लान कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन और वो इवेंट का हमारे पास एक बजट है. जो मेरा है, ये मेरा इवेंट बजट है. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ राइटिंग को. ये मेरा इवेंट बजट है और इवेंट बजट में अलग अलग आइटम्स हैं एट डिफरेंट प्राइसेस. So I want to control this and want a data validation where a person cannot go on adding as much as he wants for an event. अभी event के अंदर there are various different items, right? एक हो गया हमारा decorations हो गया, एक हमारा stage हो गया, एक हमारा food हो गया, एक हमारा drinks हो गए. चलिए, so डेकोरेशंस है, स्टेज है, फूड है, ड्रिंक्स है, कोई परफॉर्मर होगा इवेंट के लिए स्टेज पे, तो वो होगा. बस मोर और लेस यही होता है बेसिक. डेकोरेशन, स्टेज, फूड, ड्रिंक्स और परफॉर्मर. और यहाँ पे मेरे पास टोटल है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, I don't want my budget to exceed, let's say, 50,000 rupees. I don't want my budget to exceed 50,000 rupees. Okay. So I'll first select all this. And I'll say चलिए डेटा वैलिडेशन में चलते हैं. And in data validation, I have an option known as custom. यहाँ पे whole number decimal आपको पता है, date आपको पता है. मैं अभी custom में जा रहा हूँ. The meaning of custom is that means I am going to apply a formula over here for my data validation so that I can limit my budget. तो आप बोलोगे सर ये आपने सिलेक्ट किया, आप डेटा वैलिडेशन विंडो में आ गए हो, ये टोटल का कनेक्शन यहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे आप? क्योंकि मेरा टोटल पे बजट चल रहा है ना, इन पे थोड़ी चल रहा है बजट. बजट तो टोटल पे है. बट हाउ डू आई गेट माई टोटल? माई टोटल इज एन एडिशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स. So right now my total is nothing. I've not applied any formula here. So even though I've come into a data validation window, always understand this: whenever you are looking at applying any formula in data validation, first step
जो फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है वो फॉर्मूला जरूर याद डालिए. दैट मीन्स माय टोटल इज डिपेंडेंट ऑन these values. So over here, even though there is no value, you please put a formula which includes these cells. Now my total is activated कि हाँ भाई अब मेरा total इन पे based है. चलिए, so I will now select these. After I have selected these, now I will go to data validation and I will choose custom. Then he's asking, okay, what's the formula you're going to implement here? अब मैं formula यहाँ type करूंगा equals to sum opening bracket. Now always remember, I have told you before also, if you remember, जब हम conditional formatting कर रहे थे, that the dollar symbol is very important. So I will put dollar B, $4, dollar B, $8. यही तो है मेरा टोटल. B4 to B8 है ना मेरा टोटल. And greater than or less than equal to 50,000. Less than equal to 50,000. So we are very clear कि इस फॉर्मूला पे मेरा डेटा वैलिडेशन सेट हो गया है. अब चलते हैं इनपुट मैसेज में क्या डालना है. डू यू वांट टू पुट एन इनपुट मैसेज? मैं बोलता हूं आई डोंट नीड टू पुट एन इनपुट मैसेज. ओके. एरर अलर्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. बजट लिमिट एक्सीडेड. भाई आपने बजट लिमिट एक्सीड कर दिया है. यू कैन नॉट एक्सीड budget limit of 50,000. मैंने ये मैसेज डाल दिया, you cannot exceed the budget limit of 50,000. और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया. Person starts typing. He doesn't know. Again, I'm telling you, there is nowhere here mentioned 50,000. He doesn't know. He just starts. डेकोरेशन मंगाना है, कम से कम 15,000 जाएगा. अच्छा ठीक है. स्टेज, अरे स्टेज में कम से कम 5,000. चलिए. अरे यार फूड पे, अरे वी कीप अ वेरी लैविश फूड. चलो लैविश फूड कितना? 25,000 कम से कम. चलो. ड्रिंक्स, ओ नो, ड्रिंक्स पे तो 10,000 कम से कम खर्चा है. आ गया. बिफोर यू कुड इवन फिनिश आ गया मैसेज, भाई साहब यू एक्सीडिंग 50,000. चलिए वापस रिकैलकुलेशन. तो बोलेगा भाई कैंसिल. फूड को कम करो, टू मच हो गया, 15,000 में करो. यहीं 35,000 हो गया. अभी ड्रिंक्स में क्या करेंगे? ड्रिंक्स में कुछ नहीं रखो, एकदम सिंपल ड्रिंक्स रखो, नींबू पानी रखो. चलो यार 5,000 रुपीज. चल भाई बजट में तो जा रहा हूँ. परफॉर्मर को दे सकते हैं हम लोग. चलो परफॉर्मर को 8,000 रुपीज देते हैं. वी आर इनसाइड आवर बजट ऑफ 40. चल हो गया. It's a fantastic way to organize your events budgeting or anything that you're doing, because automatic control है budget पे. इसको और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. एक मैंने कंडीशन डाला है कि इफ इट गोज अबाउ 50,000 तो एरर मैसेज आएगा. तो 50,000 के ऊपर तो आप जा नहीं सकते. बट इसके अंदर ही हम लोग एक और कंडीशन दे सकते हैं दैट इफ अवर total exceeds 40,000 rupees, we can give a red color का symbol saying कि यार आप थोड़ा बजट से ऊपर जा रहे हो. You're not touch the limit of budget, but yes you are on the higher side of your budget. तो यहाँ पे conditional formatting में I can apply highlight rules. तो I am doing a multiple thing now.
एक मैंने आपको डेटा वैलिडेशन दिखा दिया, उसी पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूंगा। जब आपका वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 40,000, तो मैं वहां पे इसको एक लेट्स से रेड बॉर्डर दे दूंगा। देखिए आ गया रेड बॉर्डर, तो पर्सन नोज। अब ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने दिया है, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, आई कैन एडिट दिस रूल, आई कैन चेंज दिस फॉर्मेट। मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे रेड बॉर्डर देना है, बट ये रेड बॉर्डर बहुत पतला है, इसको थोड़ा थिक करना है। कलर आ गया, बट थिकनेस का मुझे ऑप्शन ज्यादा नहीं दे रहा है, इतना ही दे रहा है, अनफॉर्चुनेटली इतना ही दे रहा है, क्या करें। तो ठीक है फिल भी कर देते हैं, चलिए उसको एक काम करते हैं, लाइट रेड फिल दे देते हैं। ये नहीं चाहिए तो यहां से जाके देखिए कितना कस्टमाइजेशन पॉसिबल हो सकता है एक्सेल में। ये वाला दे देते हैं, चलिए there you go. So you get an indicator कि यार you're going over budget, तो पर्सन से अरे ओवर बजट जा रहे हैं, because I gave a range of 40,000 only. So you are multiple condition here. एक कि अगर आपका ये बजट 10,000 हो जाता है तो आपको एरर मैसेज आएगा, अरे ये क्या हुआ, लिमिट वाज 50,000, 50 तक अलाउ करेगा, 50 के ऊपर नहीं करेगा। सो एक ये है मेरा, यू हैव एक्सीड बजट ऑफ 50,000, प्लस ये मेरा रेड इंडिकेटर आ गया है सेइंग कि आप पहले ही ओवर बजट चल रहे थे, 50,000 पे ही रेड आ रहा है। वो बोलेगा इमीडिएटली कम कर देता हूँ, 5,000 कर देता हूँ उसको, भाई चलो 40 में भी रेड आ रहा है, अरे आई एम स्टिल ओवर बजट, अच्छा तो क्या करें, इक्वेशन कम कर देते हैं, चलो 10,000 निकल गया रेड। तो यू नो दैट यू आर विद इन द बजट and you have not gone over budget because there is no red symbol, and if you exceed 50, straight away message will come you have exceeded your budget. Two multiple conditions in one budget planning. Coming to one more aspect of Excel, जहां पे डुप्लीकेट एंट्रीज होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं, and you want Excel to trap those duplicate values and delete them out. So आजकल तो बहुत easy हो गया है, Excel has got a button itself which allows you to remove duplicate values. ये मेरा डेटा है, and in this data I've got some names which are repeating. And I may want the names to have unique countries. That means one employee's name should not appear more than once for any country. ठीक है ना? जैसे for example in this data, Smith, Johnson, Williams, Jones, Brown, ये मेरे मेन एम्प्लॉइज यही हैं. Smith is appearing once in UK, once in US, and once more in US. Smith is appearing twice in US, once in UK. Same way, Johnson है. Johnson appears once in US, once in UK. That's it. और बार Johnson आया नहीं है. William भी once in UK है, one more time in UK है, one more time in UK, 3 times in UK Williams is. So I want to remove this 3 times entry, 2 times entry of an employee in a one particular country. I've changed the dynamics of this. मैं data को थोड़ा modify कर रहा हूँ for that purpose. And forget about the quarters for now. So how do we do that? So when I go to data, I've got a button known as duplicate or remove duplicate.
मैं कोई सिलेक्शन नहीं करता हूँ, ऑटोमेटिक डेटा सेलेक्ट हो गया. My data has got selected automatically by Excel. It says yes. Now what do you want to do? I say I want to remove data which is based on last name. So I will take out the sales and I will take out the quarter. He says, okay, you want to remove data based on the last name and country. That means right now my relation of removing data is based on country and last name. कि हाँ भाई वो आदमी को एक ही बार एक country में होना चाहिए. He can't be doing multiple business with that country. In this particular example, I am showing. And I say okay to it. और देखिए beautifully काम करता है. It took out the duplicates. अब स्मिथ एक ही बार यूके में है और यूएस में है. विलियम्स भी एक ही बार यूके में है, एक ही बार यूएस में है. All of them, if you notice, are appearing only once in a particular country. यहाँ पे duplicate values of country is gone for the employees.